Good morning, students. How are you all? Fine? Yes. Now today, because of some problem, we cannot meet in the online class, right? You know what is internet problem is there. So I have already told you. Like that, for that we have to, I have to send the videos to you, right? Okay. So that is, हमने last time देखा था that the force on the current carrying conductor in a magnetic field. When the current carrying conductor जब current pass होता है, then what happened? That is, it behaves like a magnet, and that magnet is not a permanent magnet. It is the temporary magnet. It is called the electromagnet, right? We have also seen about the properties of magnetic field lines. What is magnetic field and what is the right hand thumb rule? Why it is used and all that we have seen last time. Instead of only one straight conducting wire, if we use the loop that is a circular loop अगर हम use करते हैं, then also what is that and how with that double magnetic field is stronger, double than the straight conductor, वो भी हमने देखा था. तो उस पे से हमें आइडिया मिलता है that Oersted has given this all this experiments and all. तो हमने उसने आइडिया दिया that instead of straight conductor, if one loop can produce a double stronger magnetic field, then instead of one loop now, if you use the coil, then n turns are there. N turns matlab if you want that more than one turn is there, then more stronger magnetic field can be produced, which can use in many appliances to produce a strong magnet, right? Okay, to produce the strong electromagnet, and for that n turns of coil is connected to the battery and key. That circuit, that instrument is called solenoid. So now today we'll see about the solenoid, how it works, what is its principle, what is its structure, and how it produces the stronger magnetic field, right? So that here is given the diagram which is of solenoid. Okay, so now 2 marks का क्वेश्चन आ सकता है, या तो इसमें से शॉर्ट आंसर भी हमें मिल जाएंगे. तो व्हाट इज सोलेनॉइड? एक्सप्लेन सोलेनॉइड विद द डायग्राम. सो हियर इज द, दिस इज, you know that here is the coil. This is, you can compare it with the spring, that is n turns is there. So one straight wire, if you take one straight wire, insulated wire, and उसका one end यहाँ पे है, then you take this another end in your hand and wound it around this n turns, whatever turns you want, right? Whenever the length of the wire is increases, the number of turns are also increases. So you just take an insulated long wire and you just write this one end over here, and the another end you will wound it around this cylinder. This is the iron cylinder or any other metallic cylinder, जिसको आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे wound it कर देंगे. And this another end is over here. This two ends is connected to the source of electricity, that is whether it is battery or cell and key. So this whole construction is called solenoid. This is just look like this. So here is this is our cylinder around which we wounded that insulated wire around the cylinder, and this two end of the wire is connected to battery and key. So this is the solenoid, in the solenoid, this is a hollow cylinder. In that cylinder, if you put this iron rod or anything, then it behaves like a magnet. You can produce a strong magnetic field by n turns of the wire, right? That means here, a coil that is n turns का wire का गुच्छा, like spring, okay? A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely, that is wounded closely in the shape of cylinder is called solenoid, right? अगर इसके ऊपर आप करते हैं फिर बीच में से वो सिलेंडर निकाल लो, that is what it is, a coil.
right? Then this is called the solenoid. Pattern of magnetic field line. Here, whenever you plug on the key, then current pass through this solenoid, current pass through this coil, and here it is, direction of current is this. Then what happened? This direction of current pass through this and it behaves like a magnet. It produces a magnetic field surrounding area. So that pattern of magnetic field line is similar to the bar magnet. One end is behaves like a north pole and the another end is behaves like a south pole. So it is just behave like the bar magnet. और bar magnet का जितना stronger magnetic field होता है उतना ही strong magnetic field it can produce. You understood this? Yes. The field lines are parallel inside the solenoid. You can say this is the field lines inside the solenoid. So we have already discussed it that the field lines never cross each other. Therefore, it all is parallel, just like the bar magnet. Here also emerge from here to here, right? एक पोल से अंदर जाएगी, दूसरे पोल से बाहर आएगी. And whenever we goes outside that farther from the solenoid, that magnetic field becomes weaker. So ये कम होती जाएगी. So this is just a magnetic field. That is, this is the magnetic field area, right? Okay. So now strong magnetic field is produced as यहाँ पे 1 टन, वैसे हमने 1 टन का लूप लिया था, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उससे n टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा as the current passes through the n turns. All turns of the direction of current is equal. Suppose here is our solenoid. We turn this n turns. Now with this both the end is connected to the battery and key. Plug on the key, that is switch off on कर दिया. Then current passes in the positive to negative direction. Like this, this is the turns of the wire. So यहाँ से करंट आएगा तो आप डायरेक्शन देखिए, यहाँ फर्स्ट टर्न में ऊपर की तरफ, फिर सेकेंड टर्न में फिर से ऊपर की तरफ, थर्ड में फिर से ऊपर, here ऊपर. That means all the turns have the same direction. ऐसे रखते हैं. Then from here नीचे की तरफ like this, right? That means in all the turns, जितने भी turns हमने लगाए हैं उसमें the direction of current is equal. और इसीलिए strong direction equal होने की वजह से strong magnetic field is produced, right? Okay. Magnitude of the magnetic field. If the magnitude of magnetic field को हम B बोल देते हैं, is depends on कितना मैग्नीट्यूड कितना स्ट्रॉन्ग होगा. इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. एज द करंट इंक्रीजेस, एज दिस वोल्टेज इंक्रीजेस, द मैग्नेटिक फील्ड becomes larger and larger, stronger and stronger. That depends on the current, we know that. Another thing is directly proportional to the number of turns, that is the length of the wire. Yes, the wire is more longer, the turns are more and more. जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा बार ये टर्न्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और उतनी ज्यादा टाइम्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. So here the magnetic field produced is depends on the two things. One is the current and another is the number of turns. If you want more and more stronger magnetic field, then you have to take more and more turns, right? So this is, अगर दोनों को combine किया जाए तो magnetic field का magnitude, the measurement, the strongness depends on number of turns and current I. This solenoid, this is the all about the solenoid, and this solenoid here, this solenoid is used to produce the magnetic field, used to produce the electromagnet in many electrical appliances. हम बहुत सारे electrical appliances में ऐसे coil use करते हैं. Just like the solenoid is also used in electric motor also, right? ऐसी appliances जिसमें हमें magnet की जरूरत पड़ेगी, bell,
जहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, परमानेंट मैग्नेट नहीं. यू अंडरस्टूड दिस? यस. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सोलेनॉइड. नाउ द इंटेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 229 पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. आप टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे. Make a note of this solenoid in your notebook and then write the question. Consider the circular loop of the wire lying in the plane of the table. Okay, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है. Make a note of this, right? ये सोलेनॉइड के लिए. Now consider a circular loop of wire lying on the plane of table. Suppose this is a plane of table. एक ये टेबल का टॉप है. Then circular loop of wire is here. This is circular loop of the wire. Let the current pass through the loop clockwise direction. So this is clockwise direction. So this is the current direction. Apply the right hand rule. Okay, right hand rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. Right hand rule हमने last time देखा था. तो this is our right hand, this is our thumb, right? The thumb is in the direction of electric current, then the fingers wrap around the loop and shows the direction of magnetic field lines. So always right hand से कीजिए. Right hand में suppose ऊपर की तरफ जब right hand है, that means the current is upward in here. Then this is our right hand and this is the thumb which shows the direction of electric current. Then this is the line, this is the fingers which shows the direction of electric magnetic field lines. तो ये इस तरफ आ रही है. So we will draw this like, right? And ये जो है ऊपर की तरफ मतलब बाहर आ रही है. This is the line. When here you can draw like this also. आप ऐसे भी कर सकते हैं. Okay? Then नीचे की तरफ. So here is there. Then the field line is like this. तो आपको एक बार पता चल गया ये बाहर आ रही है. Then it goes inside. opposite direction में बता दो. या तो इस तरफ. अगर ऐसे कर्व बनाया तो ये बाहर की तरफ है. Here is the loop. This is our circular loop. ये बाहर की तरफ आ रही है like this. तो यहाँ पे क्या होगा? अंदर की तरफ जाएगी. You understand this? So this is the, what is it? It is question number 1 that you just draw the diagram and you have to see the direction of current of your own fingers. आप own fingers से बताएंगे, right? Okay. So whenever here it is given inside and outside the loop, that is you just draw the diagram and show the direction of magnetic field line. The magnetic field in a given region is uniform. Draw the diagram to represent it. The magnetic field in the given region is uniform. Uniform magnetic field को दिखाने के लिए always parallel line का use होता है. So uniform magnetic field can be represented by parallel lines. That you keep in mind. Okay? Then question number, so you just draw the diagram of parallel lines. Then question number 3, choose the correct option. The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current. Here is the long straight solenoid is there. Inside that magnetic field lines, this is magnetic field is produced, right? Okay. Magnetic field inside the long straight solenoid carrying current is 0. नहीं, magnetic field तो 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि magnetic field तो होता है जब current होता है. यह carrying current दिया है. Then तो first option नहीं आएगा. Decreases as we move towards its ends. No, ऐसा कुछ यहाँ आया नहीं है कि ends पे ज्यादा है magnetic field. No, ऐसा कुछ नहीं आया.
then increases as we move towards end. No, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कोई भी यहाँ explanation नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम. No, equal lines are there. Parallel lines यहाँ पे बोला था मैंने कि here is the parallel lines, it never cross. और parallel lines कब होती है? Uniform magnetic field है तब. That means it is the same at all the points. Solenoid में here all the points में magnetic field is equal, is same, not increasing, not decreasing. Understand that? Yes. Now we move ahead with the next topic is force on the current carrying conductor in a magnetic field. So for that you have to see the diagram first. Okay, so see this figure first. You have to see the figure very carefully first of all. Okay, what is it? Force on the current carrying conductor in a magnetic field. First of all, French scientist André-Marie Ampère, who have discovered the electric current also, has suggested that magnet exert equal and opposite force on the current carrying conductor. अगर किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, then that conductor will behave like a magnet. You understand that? It is called the electromagnet, जो हमने पहले देखा था. Now in this, what we suggest that कि whenever the magnet if the conductor is placed in the magnetic field, अगर किसी मैग्नेट के नजदीक ये कंडक्टर रहता है, then this magnet also apply the force on this conductor. Magnet apply the force. Why? Because this conductor in which the current appear is also behave like a magnet, and that conductor is placed in the magnetic field. तो ये तो मैग्नेट है, so एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा. इफ लाइक पोल्स है तो रिपल्स होगा और अनलाइक पोल्स है तो अट्रैक्ट होगा. So this force is applied by a magnet on the current carrying conductor. So this is the experiment here. This is the activity here is. Here is this is A and B. This is the aluminium rod, right? Which is a current carrying conductor. आप copper rod भी ले सकते हैं. So this is aluminium rod. It is hanging on a stand, suspended, which move freely. Like that you have to suspend it. That is उसको आपको hang करना है from this stand. This is stand के ऊपर by two current that is conducting wire लेके you just hang it, you just suspended it so that it can move freely. So here is the conductor, that is aluminium rod. Now this aluminium rod is connected to this conducting wire, key and battery, so that from that we can pass the electric current. Then place a horseshoe magnet. This is our bar magnet. अगर ये bar magnet है, this is our rod, not a bar magnet. This is our rod. ये rod है, like this. ये हमने rod यहाँ पे रखा है, right? तो ये rod, here is the rod जो hang किया हुआ है, suspended, move freely. This is placed in a magnetic field of horseshoe magnet. We place a horseshoe magnet in such a way that this north pole is below the conductor and south pole is above the conductor. इस तरह से like this is a suspended conductor conducting wire and we just pull this horseshoe magnet so that ये horseshoe magnet का यहाँ पे magnetic field area आ जाएगा. So this is the conductor which is placed in the magnetic field area. ये magnetic field area में रखा हुआ है. Then we switch on the key, that is plug the key. So the electric current pass through positive to negative from here in this circuit. Whenever electric current pass through this is the conductor, this aluminium wire, that is aluminium rod, behaves like a magnet. So it behaves like a magnet, and here is the horseshoe magnet which apply the force on this conductor so that what happened? It moves towards left. Now
you observe that कि ये जो कंडक्टर था it moves towards, this is like left की तरफ वो move हुआ. Now if we reverse this terminals, that means that if you reverse the direction of current, तो वो instead of left now it moved toward left, that is right. That opposite direction में move होगा when you reverse the direction of current. Same way, here is the placed horseshoe magnet in such a way that this north pole is below the conductor and south pole is above the conductor. If you do not want to change this current direction, you do not want to change this terminal, instead of that if you change this magnet, पोल अगर आप चेंज कर देंगे, हियर लाइक दिस जैसे रखा था उसे ऐसे रिवर्स कर दिया, सो नॉर्थ पोल इज अबव एंड साउथ पोल इज बिलो दिस कंडक्टर, then also the movement instead of left it is displaced towards the right. You understand that? So that the force depends on the direction of current as well as the direction of magnetic field lines, so that magnet exerts the force on current carrying conductor. अगर हम मैग्नेट रखते हैं तो भी ये मूव करता है, अगर ये ले लेंगे तो इसमें से करंट पास होगा. This rod behaves like a magnet, पर वो डिस्प्लेस नहीं होगा. When it displaces, वो डिस्प्लेसमेंट कब होता है? When it is placed in a magnetic field, उसके नजदीक अगर आप मैग्नेट लाते हैं तब. तो that means कि अगर हमने पहले नॉर्थ साउथ पोल रखा था तब इट डिस्प्लेस इन लेफ्ट, जब हमने ये पोल को ट्रांसफर कर दिया, साउथ एंड नॉर्थ को इन्वर्स कर दिया, इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट. तो हाउ वी डिफाइंड, हाउ वी कैन फाइंड कि वो कौन सी डायरेक्शन में कब मूव करेगा. सो हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज अप्लाई बाय दिस हॉर्सशू मैग्नेट. हॉर्सशू मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करता है वो उसकी डायरेक्शन हम कैसे चेंज कर, कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेट ऑन द कंडक्टर इज defined by the French Fleming, the scientist Fleming. That is the Fleming left hand rule. Fleming left hand rule says that पहले कौन सा रूल आया था? राइट हैंड रूल. अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन फोर्स अप्लाई करता है? मैग्नेट. किसके ऊपर करता है? करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर. सो द फोर्स अप्लाइड बाय the magnet on the current carrying conductor, the direction of force is defined by, is discovered, that is can be found by this right left hand rule of Fleming. Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule says that whenever, here is the forefinger, thumb and the second finger, stretch in such a way that they are mutually perpendicular to each other. ये दोनों तीनों को ऐसे स्ट्रेच करो कि यहाँ पे देखो, this is a right angle, here is the right angle and this is the right angle. So they are each mutually perpendicular to each other होना चाहिए. So that ये अगर तीनों के तीनों एक दूसरे से perpendicular हैं, then this forefinger, that is the first finger जो है, is magnetic field. ये हमारा horseshoe magnet है. तो this is the direction of magnetic field. अगर horseshoe like this, तो ये magnetic field यहाँ पे होगा, right? So the first finger should be in the direction of magnetic field. This second finger is in the direction of current. तो ये हमारी current की direction है वायर में. तो this is the direction. You know that this is. So this is the direction of current. Then this thumb shows the direction, ये मेरी तरफ है, मतलब कि ये जो है इस तरफ डिस्प्लेस करेगा, राइट. इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई तो वो इस तरफ, दैट इज यहां से ऐसे जाएगा. यू अंडरस्टैंड दैट? दिस इज फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस करेगा. सो व्हेनेवर हियर इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉर्सशू मैग्नेट ऐसे रखा है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, तो ये जो है लाइक दिस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर जब डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तब क्या होगा, लेफ्ट, मतलब ये थंब शोज द डिस्प्लेसमेंट। अगर डायरेक्शन हमने चेंज करके इस तरफ कर दी है तो वो थंब इस तरफ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, ऐसे डिस्प्लेस करेगा अंदर की तरफ। सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज हियर और हियर। वो कैसे पता चलेगा, बाय द डायरेक्शन ऑफ थंब, बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। So here is the French scientist André Marie Ampère suggested that magnet exerts equal and opposite force on current carrying conductor. So direction of force on the conductor depends on the direction of current and the direction of magnetic field. Direction of current अगर change हुई तो भी displacement change होगा left से right. अगर ये हॉर्सो मैग्नेट को रिवर्स किया, नॉर्थ एंड साउथ पोल को रिवर्स किया, तो भी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger in such a way that they all are mutually perpendicular like this. ये mutually perpendicular है, right? Then first finger shows magnetic field, क्योंकि ये हॉर्स तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, like this. This is the current and here is the displacement. So the thumb will point to the direction of motion of conductor. ये इस तरफ आएगा कि पीछे की तरफ जाएगा, वो थंब की डायरेक्शन से पता चलता है। So this is all about the force acting on the current carrying conductor by the magnet. क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर खुद ही एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। अंडरस्टैंड दैट? यस। सो नाउ दिस इज ऑन द पेज नंबर 231. द in-text question is there. Which of the following property of proton can change while it moves freely in a magnetic field? There may be more than one correct answer. So here जब भी हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन मतलब आप मैग्नेटिक कंडक्टर को कर लो, सो उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, राइट? ओके, देन इन एक्टिविटी 13.7, ये 13.7 मतलब अभी जो हमने ये डायग्राम करके मैंने बताई वो, हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी, दिस इज अवर रॉड ए बी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी will affected if current AB increase, stronger horseshoe magnet used and the length of the rod is increased. अगर लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीज करेंगे तो भी करंट ही इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज करेंगे या तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, इन ऑल द केसेस दिस डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज। या तो जितना ज्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, जितना लंबा वायर उतना लंबा इतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट इंक्रीज होगी और इसीलिए फोर्स इंक्रीज होगा। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीज। या तो आप करंट को इंक्रीज करो या तो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करो, और यू कैन इंक्रीज दिस लेंथ ऑफ द वायर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इन ऑल द केसेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग उतना फोर्स ज्यादा, उतना डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। सो इन ऑल द केसेस व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑन द रॉड ऑफ AB? द डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो इंक्रीज। एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल projected towards west is deflected towards north by the magnetic field. The direction of magnetic field is upward by the Fleming left hand rule. Right? By the Fleming left hand rule. Put west में here positively charged particle, that is electric current, upward towards the west and deflected towards the north, and therefore deflected towards, this is one direction, this is one. तो ये जो हमारा थंब है वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ऑब्वियस है दैट व्हाट इज इट, यस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। ये क्या दिया है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। देन
प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट कौन होगा, जो रॉड होगा वो, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ इज हियर, देन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ओके, so this is, here is the use of this force applied by the magnet on the conductor. So जब करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तब मैग्नेटिक इफेक्ट हमें दिखाई देगी, या तो वो लेफ्ट या राइट डिफ्लेक्शन होगा। तो आप अंडरलाइन कीजिए पेज नंबर 231 पे जो एग्जाम्पल 13.2 है उसके ऊपर, द डिवाइस that use the current carrying conductors and magnetic field include electric motor। मतलब कि ये जो इफेक्ट है मूवमेंट की, whenever the current passing through the conductor it behaves like a magnet and वो मैग्नेट रिफ्लेक्ट करेगा, उसके अंदर ये जो यूज है, ये जो इफेक्ट है वो कहाँ, कौन से डिवाइस में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, electric generator, loudspeaker, microphones and measuring instruments, right? That is measuring instruments में use होता है ये effect to produce the magnet and displacement. Okay, so you just underline that. Now if ये सारे डिवाइस में से कोई एक डिवाइस में हम वो इफेक्ट चेक करेंगे, देखेंगे हाउ इट वर्क्स, कि ये कैसे वर्क करता है। So we will see the electric motor. Electric motor is a device that converts the electrical energy to the mechanical energy, right? So now we will see about the electric motor, right? Okay.